स्टार्ट कर दे। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ। मेरा अकाउंट एक ऑलरेडी बना है, मैं नया एक बना के दिखाती हूँ। चाहिए तो रेफरेंस के लिए वो मैंने जो भेजा वो भी देख सकते हो, तो इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे माई साइट, ओके। सो वंस यू क्रिएट एन अकाउंट, wait, in Weebly, now I'll log out and see how I have to enter in the website. Sign out. हाँ, तो अभी वीबली में लॉग इन किया। मैंने सीधा जीमेल से ही लॉग इन किया। यहाँ पे लॉग इन विद जीमेल। मेरा जीमेल यहाँ पे है ऑलरेडी लैपटॉप में। Then I can create a site here. One more. My site. Add a site. This is similar to the original one I created. Then I just need a website. I need a website with an online store. I have not chosen the online store because I have nothing to do with selling it now at the moment. So just a proper professional अपना e-portfolio के लिए I just need a website. Then there are various themes, business, portfolio. वैसे वो themes में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, पर पोर्टफोलियो के डिजाइन थोड़े पोर्टफोलियो लायक है। मैंने ये वाला लिया था, ये बहुत एक्यूरेट है। और यहाँ पे उन लोग दिखाएगा एरर है, पर वो डोंट माइंड दैट, यू जस्ट स्टार्ट एडिटिंग ओवर हियर। Then they will ask for another domain name. So if you want a domain in your name, then you have to buy it. But if you have a Weebly domain, then it's free of cost. So तू ही ना रॉय बना सकता है। सर्च डन, ये वाला तू ही ना रॉय वीबली डन। So now my domain is created. I just have to edit it. So in my original website, I did this. Hi, I am Tuhina Roy, creative. तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स डाला है, तो उसी में एडिट कर सकता है। कंप्यूटर में इजी होता है, मोबाइल में होता ही नहीं है एडिट, ये अलग से टेक्स्ट बॉक्स डालना पड़ता है। So this is the build tool. These is pages where you can add pages, home, work, ये और अलग अलग टाइप के पेजेस हैं। We are using standard page because standard page gives you a proper page to actually work and add stuff into. Then you have a blog page where if you have to put the link of your blog if you have any. Like यहाँ पे blog का link अगर डाल दिया ना, तो जब भी हम लोग वो मेनू में यहाँ पे अगर ब्लॉग है, तो अभी ब्लॉग पे क्लिक करेंगे ना, तो वो सीधा तुम्हारे एक्सटर्नल लिंक पे चला जाता है, अपने ब्लॉग पे। तो अगर यहाँ पे मीडियम का मैंने डाला, वन सेकंड। So if I now I have put it done, so now my blog page is created. If people have a blog that they want to showcase, and category product page is for actually business people जिन लोगों को सेल करना है, तो वो स्टोर है। और एक्सटर्नल पेज में यू कैन ऐड एनी वेबसाइट। तो हम लोग को जो मैम ने सिखाया था ना वो आईटी में, टू क्रिएट अ वेबसाइट ऑन योर पेडागोजी, so if you add that link over here, then you can either open it in a new tab or in the same tab, then that website is also created. So this is what the pages is all about. Then there is an option to reorder also. You can reorder like this, ऊपर नीचे कैसे करना है? हाँ, ऐसे ऊपर नीचे आ रहा है। तो ये रीऑर्डर हो गया।
पर पेजेस का एक है कि इट ओनली क्रिएट्स सेक्शंस एंड पेजेस, बट व्हेन यू एक्चुअली गो ऑन द पेज, जैसे ये अबाउट मी पेज है, तो ये सब जो टेक्स्ट है ना, ये तुम्हें खुद एडिट करना पड़ेगा. फॉर दैट यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग दिस ऑप्शन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्ड. तो यहाँ पे if you want to add a title, like about me is already given, which is why we are using this template, because all the things are just given. You don't have to do anything. You just have to give your information and make it more attractive. So if I add a title here, तो एक बड़ा टाइटल इधर आ गया. मैंने अपना सब इधर ही किया. ये दो जो डिवाइडर है ना, ऊपर इधर अपना ऐड किया. अबाउट मी. अबाउट मी इज बेसिकली योर रेज्यूमे. Then you can change the background also. So this is like the edit background. You can add whatever background you want. Then give any effect you want. फिर सेक्शन पेज होता है जहाँ पे आप जितना भी क्या बोलते हैं, नया नया कैटेगरीज बनाना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू मेक दिस सेक्शन ग्रुप प्रोजेक्ट्स का सेक्शन, तो यहाँ पे यू विल ऐड अ टाइटल कि सेक्शन बना है ग्रुप पेज के लिए, तो यहाँ पे टेक्स्ट डाल दो ऐसा. फिर लिखो ग्रुप प्रोजेक्ट्स in the same page. Then you can add images of all the group projects that you have done. Upload it from your computer, image URL, जो भी अपन नॉर्मल वेबसाइट में बनाने के लिए करते हैं ना, वैसा ही है. गैलरी वाला ऑप्शन मैंने अभी तक सही जगह पे एक्सप्लोर नहीं किया, but gallery is again like you can have multiple images. So if you have many projects that you want to showcase in one go, then you can upload multiple images. Let's try. ऐसा होता है. So in gallery you have an option of add images, which you did not have only in image section. So हाँ, तो ऐसे सब आएगा, लाइन में बहुत सारे इमेजेस आते रहेंगे. मैंने भी ऐसा ही फॉर्मेट यूज किया अबाउट मी में. तो पहले अपना, अगर कुछ डेटा है वेर यू आर वर्किंग ऑन एनी current project, any current job that you're working on. Then education qualifications में short courses, your degrees, qualification, experiences में community work, internship, professional work. Then awards and recognition में all your eligibility tests like CTET, NET exams that you have cleared maybe, or any recognition of like best student award, best presenter, best researcher and all those things. और एक है ऑप्शन यहाँ पे ऑफ स्लाइड शो. सो स्लाइड शो इज लाइक, ये बंदी का भी इधर फोटो है, तो हम लोग स्लाइड शो में अपने बहुत सारे ऐसे फोटोज दिखा सकते हैं जहाँ पे हम लोग ने अपने अपने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है. तो ऐसे अलग अलग टाइप के स्लाइड शोज आएंगे. मूविंग स्लाइड शो, थंबनेल विद बॉटम छोटा छोटा स्लाइड शो, ऐसे छोटा छोटा अलग अलग आएगा. मैंने वो एक्सप्लोर नहीं किया है, पर वी कैन ट्राई और यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन. दिस इज जस्ट एन एडिशनल एडवांस थिंग टू मेक इट लुक अट्रैक्टिव. आई विल ऑल्सो ट्राई दिस नाउ. आई हैवंट ट्राइड एनीथिंग. फिर एचडी वीडियो वाला ना जो ऑप्शन है वो खरीदना पड़ेगा, क्योंकि वो यूज नहीं होता. फिर और एक सही चीज है हम लोग यूज कर सकते हैं, वो है सोशल आइकन्स. सो इन सोशल आइकन्स यू कैन पुट योर सोशल मीडिया अकाउंट्स. फॉर एग्जाम्पल दे हैव ऑलरेडी गिवन यू सम ऑप्शंस ओवर हियर, बट यू कैन एडिट देम. So like manage icons में you can go and you can add as many social media accounts as you want.
whatever they have an option. Like I tried putting in what uh, मेरा एक अकाउंट था कोई एक साइट पे, पर उसका ऑप्शन ही नहीं था इसमें। अभी वो आ गया शायद। गूगल प्लस। हाँ, यूट्यूब में ढूंढ रही थी तभी, यूट्यूब नहीं मिल रहा था तभी, कुछ और था। सो नाउ यू कैन गो टू फेसबुक, यू कैन पुट योर लिंक, एंड देन इफ यू वांट टू शो इट ऑन योर वेबसाइट यू शो, अदरवाइज यू कैन हाइड इट ऑल्सो। लाइक इट गोज अवे, देखो उधर गायब हो रहा है। देन यू कैन री ऑर्डर द थिंग, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। सो अगर ये भी अबाउट मी सेक्शन में रहेगा तो दे कैन एक्चुअली लुक एट योर लिंक्डइन साइट्स एंड हाउ वेल योर लिंक्डइन साइट्स आर। मेरे लिए तो हेल्पफुल था ये। फिर मैप, इफ somebody wants to show the location of the job or something, then they can put it here. फिर सर्च बॉक्स इज फॉर दोज वेबसाइट्स, ई पोर्टफोलियोज, जहाँ पे बहुत सारे हमारे पेजेस है और हम लोग को मालूम नहीं कि वो सामने वाला जो देख रहा है, इफ ही हैज पेशेंस टू गो एंड ब्राउज ऑन हिज ओन। अदरवाइज सर्च में क्या है, तुम टाइप कर दो तो वो पेज और वो टेक्स्ट खुद ब खुद खुल जाएगा। मेरा इतना बड़ा नहीं है तो मुझे सर्च का ऑप्शन का जरूरत नहीं पड़ा, पर अगर फ्यूचर में बड़ा होगा तो सर्च करना पड़ेगा। फिर ये एम्बेड कोड क्या है? सॉरी, मैं सब एक ही पेज में दिखा रही हूँ बिकॉज बाकी सब खुद ब खुद हो जाएगा। वो मैं बाद में बताती हूँ हाउ टू मेक इट मोर रिसोर्सफुल, बट नाउ आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द टेक्निकल एस्पेक्ट्स। यहाँ पे जो भी लिंक डालना, आई थिंक वी कैन पुट सम लिंक्स, क्योंकि बहुत सारे हम लोग ने प्रोजेक्ट्स किए जो मे बी ऑनलाइन होंगे, तो वो हम सब इधर एक जगह पे लिस्ट कर सकते हैं। सी देयर इज अ डिफरेंट सेक्शन फॉर दैट। वो ऑटोमेटिक खुद एक अलग अलग सेक्शन कर देता है, मैप का एक सेक्शन, सर्च का एक सेक्शन, लिंक्स का एक सेक्शन। देन कॉन्टैक्ट फॉर्म भी है, अगर किसी को तुम्हारे इस पे फीडबैक डालने का है तो। comment on your website e-portfolio. This is actually good for your employees or like people who are recruiting, so that they can give a feedback on how well they wanted your job profile and anything like that. बाकी सब जो न्यूज़लेटर फॉर्म है, RSVP फॉर्म है, I believe all these are for magazines and websites which are belonging to an organization or institution. RSVP is generally about invitation. Then what works best for e-portfolios is YouTube videos and YouTube videos and files. So मैंने क्या किया था, मेरे ओरिजिनल वेबसाइट में ऐसा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए थे, ग्रुप प्रोजेक्ट्स के, ऐसे बहुत सारे इमेजेस डाले थे, और वो इमेजेस में एक्चुअली मैंने फाइल्स डाले थे। सो इफ दे क्लिक ऑन द इमेज which is actually a file, then it will download the project that I have made. समझ रहा है ना कि मैं बोला फास्ट बोला? You will explore it once you understand the gist of it. Then the rest of the buttons over here, like spacer, divider, button. बटन इज फॉर हाइपरलिंक, मतलब अंदर ही तुम एक बटन ऐड कर सकते हो। आप लोग ने वेबसाइट में सीखा था ना, होम पेज का एक बटन है, फिर होम पेज के बाजू में एक और लिंक ऐड हो सकता है विच विल टेक यू टू होम कॉन्टैक्ट पेज। सो बटन इज बेसिकली अबाउट हाइपर लिंकिंग, यू कैन पुट अ लिंक हियर। सब फोन नंबर भी डाल सकते हैं, क्योंकि फोन नंबर का एज सच कोई ऑप्शन नहीं है, हम लोग को खुद ही टेक्स्ट का एक बॉक्स बना के फोन नंबर डालने का है। And divider and spacers are basically giving an aesthetic value to the website. So if I add a divider here, so it actually divides the two sections. तो clarity ज्यादा हो जाता है कि एक section अलग है, ये section अलग है. And spacer is basically giving spacing between two things. तो दो projects के बीच में एक gap डालने के लिए spacer we can use. So this is all about the editing part and how you can use the build and themes and pages options in the e-portfolio. Then comes a theme option that is all about colors and
तुम्हें कैसा मोड में डालना है, डार्क मोड डालने का है, जैसे से कलर बदल जाएगा। फिर और भी कलर्स के ऑप्शंस आएंगे यहाँ पे। और थीम ये सब ही है। आप खुद का भी थीम इंपोर्ट कर सकते हो यहाँ से, खुद का थीम बना के। पर ई पोर्टफोलियो का बेस्ट पार्ट वही है कि सब और दिया हुआ है, तो मैंने उतना मेहनत ही नहीं किया इम्पोर्ट इम्पोर्ट करने का। पर अगर किसी को बहुत क्रिएटिव करने का तो दे कैन इम्पोर्ट इट ऑनलाइन डाउनलोड करके। तो टेक्निकल एस्पेक्ट सबका क्लियर हो गया। एंड ऑल दीज ऐप सेटिंग्स एंड हेल्प, दीज आर ancillary things that you can that is not required to make a website. This is how you view it in desktop and how you view the website in mobile. मोबाइल में वेबसाइट ऐसा दिखता है, कचरा। Yeah, so ये ब्लॉग का साइट है। एप्स भी डाल सकते हैं इसमें, पर वो खरीदना पड़ता है सब एप्स एंड ऑल। फिर और एक मैंने देखा है कि इन जनरल सेटिंग्स you can categorize it what kind of website you want, but we have already chosen that as portfolio. फिर you can put a site password also, so that मेरा अभी जैसे पब्लिक में अवेलेबल है वेबसाइट, which I shouldn't have done because my dissertation is also there. So site password if you want, and you can select who all can use the password. So if you want to give the password only to the recruiter, then you can give the password to the recruiter. फिर डेट वेट फॉर्मेटिंग सब साइट का। हम पोर्टफोलियो से पैसा भी कमा सकते इफ वी वांट टू सेल आवर लेसन प्लान्स एंड ऑल, बट आई हैवंट एक्सप्लोर्ड दैट सेक्शन येट, एंड हाउ टू पिच इट आल्सो आई डोंट नो। So this is all about how to technically use the e-portfolio website, but how you pitch your portfolio has to be very methodical. So here, what I did was I started with the home page. तो होम पेज में मैंने अपना थोड़ा बहुत पहले आप बताओ, आपको कुछ टेक्निकल इसमें डाउट हुआ क्या? नहीं तो मैं बोले जाऊंगी फिर वैसे तो रिकॉर्ड हो ही रहा है तो फर्क नहीं पड़ता। नहीं, सब समझा। हाँ ठीक है। तो ये होम पेज में ना एक बहुत सही चीज इन लोग ने डाला है कि आप इधर पहला अपना नाम डाल दो, हाय, हाउ यू आर ग्रीटिंग दैट पर्सन, द पर्सन हु इज सीइंग योर पोर्टफोलियो। आई एम तुहिना रॉय, आई एम अ ट्रेनी एजुकेटर ऑफ इंग्लिश एंड ऑल, और अब बीएड स्टूडेंट, जो भी है बायो डाल दो एक लाइन में। फिर फिर यहाँ पे सही है, यहाँ पे अपना एक अच्छा एकदम प्रेजेंटेबल पिक्चर डालने का। और फिर यहाँ पे a little about myself, a brief description of from where you graduated, what are your pursuits, like why have you chosen teaching as a profession, in one para. And then in the second para what I have written is my hobbies. So as a teacher of English, what all hobbies I must highlight, तो रीडिंग, राइटिंग, वॉचिंग थिएटर, सिनेमा, वो सब डाला। फिर लर्न मोर में मे बी यू कैन हाइड वॉट एव, अगर बहुत लंबा बायो हुआ तो आप हाइड कर सकते हैं। फिर पूरा एक्सटेंडेड बायो यू कैन पुट इट इन योर अबाउट पेज। फिर ये एक बहुत इन लोगों का सही चीज है, केस स्टडी ऑप्शन। सो इफ यू आर वर्किंग ऑन योर एक्शन रिसर्च एंड ऑल ना, तो इधर एक्शन रिसर्च डालने का ऐसा, और फिर एक्शन रिसर्च का एक फोटो इधर स्क्रीनशॉट मिलके इधर डाल देने का, और फिर उसका फाइल या लिंक
पासवर्ड तो एनक्रिप्टेड रहेगा तो ज्यादा प्रॉब्लम। तो उसका लिंक अगर उन लोग ओपन करेंगे, ये ओपन नहीं हो रहा शायद, तो इसका लिंक ना प्रोजेक्ट वाले पेज में खुल जाएगा, लाइक माई वर्क। सो इफ आई ओपन दिस केस स्टडी ओवर हियर, द लिंक्स एक्टिव वंस पब्लिश्ड। अभी पब्लिश नहीं है, अभी हम लोग प्रिव्यू मोड में देख रहे हैं। तो वंस पब्लिश्ड तो वो माई वर्क में चला जाएगा। फिर माई वर्क में सारे प्रोजेक्ट्स दिख जाएंगे एक बार में, और उसी में एक प्रोजेक्ट होगा हमारा एक्शन रिसर्च। ये सारे उसके प्रोजेक्ट्स है। वो बंदी शायद कुछ कपड़े बेचती है, पर हम अपना प्रोजेक्ट दिखा सकते हैं। सो इन माई वर्क सेक्शन आई व्हाट आई हैव रिटन इज academic assignments. So whatever assignments I've done so far, group projects, individual projects, I've put it in that. And one of the projects is in my home page. Earlier it was, then I removed it because I did not continue with that project. तो कैसे होता है कि वो प्रोजेक्ट पे क्लिक करो तो प्रोजेक्ट का पेज ही खुल जाता है, सारे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं उसमें। ये है होम पेज, प्रोजेक्ट पेज। इसमें इमेजेस, इसमें अभी बनाने के लिए अभी हम लोग अबाउट मी सेक्शन से होम से वर्क में आ गए। ये मैं बाद में समझाती हूँ कि वर्क में कैसे फाइल्स अपलोड करना है। अभी होम हो गया, अभी सीधा अबाउट सेक्शन में जाते हैं। और वन सेकेंड बिफोर आई फॉरगेट, होम पेज में व्हाट यू कैन डू इज यू कैन आल्सो ऐड योर सोशल मीडिया अकाउंट्स। ये केस स्टडी हो गया। ये सब वो बंदी ने एक्स्ट्रा सब लोडेड कुछ डाला है, बट आई रिमूव्ड ऑल दीज थिंग्स because all whatever she is putting here is basically her online store. तो दैट डजंट वर्क फॉर अस। अगर लेसन प्लान ऐसे सजा के डालना है तो फिर वो डाल सकते हैं, जैसे फरीन वहीद ने किया था उनके वेबसाइट में, ऐसे सजा के एक एक लेसन प्लान डालने का कलरफुल। फिर उनके लिंक्स एक अलग पेज बनाने का, जहाँ पे सिर्फ लेसन प्लान्स का पेज है, सिर्फ ये सब लेसन प्लान्स पे क्लिक किया तो वो लेसन प्लान के पेज पे चला जाएगा। तो इसने इधर कांटेक्ट मी में शायद अपना फोन नंबर दिया है, पर हम लोग मैंने इधर कांटेक्ट मी की जगह अपना सोशल मीडिया आइकन्स डाला है। एक मिनट, ये सोशल आइकन्स, जब सोशल आइकन्स फर्स्ट पेज में डालने का एक बेनिफिट है कि इफ यू हैव लिंक्डइन अकाउंट देन द रिक्रूटर कैन जस्ट सी योर लिंक्डइन अकाउंट राइट अवे। Yeah, so here they have LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook, email. Then add your email accounts in this icon. फिर कलर वलर चेंज करना है तो शायद वो भी ऑप्शन है, आई एम नॉट श्योर। If you want to change the background here, then it comes edit background. I told you, right? So now let's go to the about section. हाँ, about section is basically the resume. तो आई टोल्ड यू ना कि क्या क्या डालने का, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स। व्हाट वी मिस्ड इन दैट फरीन वहीद वर्कशॉप वाज व्हेन आई आस्क्ड हर डू वी नीड टू शो दैट मैंने यहाँ से ग्रेजुएट किया तो उसका सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी है क्या। सो शी सेड नो, बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक इट अ हाइपर लिंक लाइक दिस। ऐसे लिंक ऐड कर दिए, और एक वेबसाइट यू कैन मेक वेर यू हैव अपलोडेड ऑल योर सर्टिफिकेट्स, or you can make a standard page within this e-portfolio where you have added all your certificates. So when they click on this degree of yours, they are taken to the certificate also. So they get a proof in the same website itself. Otherwise, what other option you can have is next to this, you can add images. Next to this, you can add image. And in this image, you can upload your certificate. तो डिग्री पासों में है, इधर डिग्री है और इधर सर्टिफिकेट है, so it becomes easy. But if you have a lot of degrees, then how will you upload it? No, so it becomes difficult. So better it is if you make it a hyperlink. इसको hyperlink ही बना देने का। पर मैंने contact page, open a new window. No, I don't want it to open a new window. It can open in the same window. So done.
तो ये अबाउट पेज हो गया. मेक द रेज्यूमे वेरी ऐप. व्हाट आई डिड वाज आई सॉ द लिंक्डइन प्रोफाइल एंड हाउ वेल दे पुट देयर रेज्यूमे. उनका ना जब ये लिंक्डइन से तुम पीडीएफ में कन्वर्ट करते हो तो उनका पूरा रेज्यूमे एकदम बराबर दिखता है. पहले एजुकेशन आता है, फिर स्किल्स आता है, एंड देन लैंग्वेजेस ऑल्सो कम. सो इन लैंग्वेजेस व्हाट, यहाँ पे उन्होंने लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं दिया है, पर एज टीचर्स सिंस देयर इज मल्टीलिंगुअल थिंग एंड ऑल, तो हम इधर लैंग्वेज का सेक्शन ऐड कर सकते हैं. ऐड करने के लिए वी पुट टेक्स्ट, देन languages. If I say I am good in Hindi, so I can put the level of proficiency, full working proficiency. If I am weak in Hindi, then I can say uh, uh, elementary understanding of language, elementary level. So that gives a clarity to the recruiter how much language proficiency you have and in how many languages. तो इंग्लिश वगैरह वगैरह जो डालना है डाल सकते हैं. वो यहाँ पे नहीं है. थोड़ा बहुत लिंक्डइन और बाकी लोगों की ई पोर्टफोलियोज देख के भी वी कैन अंडरस्टैंड हाउ टू मेक इट बेटर. सो नाउ वी आर डन विद अबाउट सेक्शन. फिर वर्क सेक्शन में अबाउट सेक्शन में हाँ, तो अभी सोचो ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, ग्रुप प्रोजेक्ट, which is actually a blog that I've created. So I will put the screenshot as a preview. Then I will add the link of my blog here, blog post. तो फिर अगर वो प्रोजेक्ट देख रहा है, मेरा प्रोजेक्ट देखते देखते उसको मन किया पढ़ने का है, तो उसने इस पे क्लिक किया तो मेरा ब्लॉग खुल जाएगा. एंड देन इफ आई वांट दिस वन to be not linked to a website because this is a private thing, I want only the recruiter to see. So what I can do is I can make it a link, but I will connect it to a file. तो फिर मैं वो फाइल इसके इमेज पे अपलोड कर दूंगी. से इफ आई वांट टू अपलोड दिस फाइल एंड नाउ दिस फाइल इज added in this image. So when the recruiter clicks on this image, the file is downloaded in his own क्या बोलते हैं, कंप्यूटर एंड डिवाइस. तो फिर वो अपने कंप्यूटर में प्राइवेटली वो अपना देख सकता है, अनलेस ही चूजेस टू पब्लिश इट समवेयर. तो उसके लिए व्हाट यू कैन डू इज यू कैन हैव कॉपीराइट्स गिवन टू इट अर्ली ऑन. तो कॉपीराइट्स के लिए तुम अलग सा मैं तुम्हें बता दूंगी कैसे डालने का. तो ये हो गया वर्क. हाउ यू एडवर्टाइज योर वर्क एंड हाउ यू ब्रॉडकास्ट इट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एस्थेटिक सेंस एंड योर वे ऑफ पुटिंग इट. लास्ट है अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस. सो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में व्हाट आई डिड वाज आई कॉपीड द फॉर्मेट ऑफ लिंक्डइन डायरेक्टली. लिंक्डइन का इतना सॉलिड फॉर्मेट है ना, तो अगर कॉन्टेक्ट सेक्शन में जाएगा, वर्क एक्सपीरियंस का एक सेक्शन बना सकते हैं. ये डिलीट नहीं चाहिए, ये सेक्शन कुछ काम का नहीं है. टाइटल डाला, टाइटल में एक्सपीरियंस. फिर एक्सपीरियंस में एक सेक्शन है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और एक सेक्शन सिर्फ वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस. So you can see whatever, for me professional experience is something that is related to money and career, and volunteering something community which I do it out of my joy. तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में मैं इंटर्नशिप भी डाला. इंटर्नशिप internship for duration, how many days I did the internship. No, sorry, where I did it first will come. Internship में role first, then organization, duration, and place. So if it's online, then you add online. If it is offline, then you add online, offline. So this is how I made my professional. ऐसे bullet point किया, क्योंकि बहुत सारे experience रहेंगे तो you can put numbered and bullet also.
And if you use this place, this kind of format, कि अगर मैंने internship किया as a trainee teacher, so my role will be trainee teacher, organization will be maybe some school that you are working in right now, I don't know which. Then duration कितने महीने के लिए, और place मतलब on offline. Place is very important because it gives that much of weightage to your work also कि ये बंदी ने actually on site काम किया है. And वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस में जो डालना डाल सकते हैं. मैंने और लास्ट, सॉरी वेरी इंपॉर्टेंट, शिट हाउ कुड आई फॉरगेट दैट, इन इंटर्नशिप डिस्क्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, what did your work was all about, and what did you do some so unique that we want to hire you? Can you show some certificates or recommendations? नहीं तो तुम फालतू काम करेगा तो हम काय को लेगा, तो वैसा टाइप का है. फिर कम्युनिटी वर्क और वॉलंटियरिंग वर्क, for that organization, role, and description. So this is all about experience. If you want to create any other page that you feel that will help your website, तो फिर यू कैन ऐड. मेरे को अभी मैंने एक नया पेज ऐड किया है कॉल्ड पैशन प्रोजेक्ट्स. So it involves all the projects, including the lesson plans that I have been very innovative about, or try to create something that is aligned with my goals and aspirations. Not necessarily सब केजेस हो में आके इधर इधर ही होना चाहिए. इनफैक्ट तक्षशिला मैम ने तो मैंने उनको पूछा था एक बार कि कैन आई मेक इट ऑन माई ओन पर्सनल ईमेल और शुड आई मेक इट इन केजेस हो में. तो शी सेड यू कैन मेक इट इन पर्सनल ईमेल ऑल्सो, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज फ्यूचर में हम लोग अपने खुद के इनपुट जा सकते हैं. केजेस ओमेगा किया तो हमें सिर्फ उनके ही अंडर हमने जो जो किया डालने का ज्यादा लगता है, इसीलिए. So then you finally publish it and your domain link is given to you. This is your domain link. Copy paste it and give it to anybody who wants. If you have a password to this, then remember the password also. I don't have a password till now, but I'll make one. हो गया, अभी मीटिंग भी खत्म हो रहा है.